Hello friends, welcome to my channel. In this video, I'm going to talk about the defects in a software testing. So let's get started. So friends, what is defect in a software testing, and what can be done if we find a defect while testing my software, and how to deal with that defect. So that all things I'm going to cover now. So let's get started. So a defect is basically an error or a bug that we find out while testing our software. So a defect is an error or a bug due to which we are unable to meet the expected result in a software testing. So let's take an example. Suppose I have to develop a software. Take for example of a chair. I have to develop a chair. I'm giving you, though this example is not very technical, but still take this as an example. Like I have to develop a chair which should have 4 legs and a circular back and something like that, so on. So once I have developed my product, I will be testing that whether my developed product is meeting with the actual product or not. Expected result is meeting with the actual result or not. So suppose while testing this software, I find out that no, there are few defects. Like instead of developing 4 legs, I have developed only 3 legs, or maybe certain kind of things. So if my actual result is not matching with the expected result, then we say that our software has a bug or a defect or an error. So this is what a defect is. So once we have encountered with a defect, so the tester will open a defect in a defect management tool, and then a defect in that defect management tool, a defect tracking will be done, and defect will be assigned to the coder, because we have seen in the software development life cycle the coding steps, the testing steps comes before after coding. So once a tester has encountered with a defect, so it will be now going to the developer to fix the code, and once the code is fixed by the developer, it will be again coming for the retest. As a tester, I will be again testing testing my software, that whether it's meeting the actual result or not. And now in the second case, suppose if it's working fine, then I'm good to go. So I will see all these things, like what happens when we encounter a defect, in the next slide. So now I will come into defect status. So once a tester encounters a defect, so it will open a defect for that bug, and the defect status something goes like this. Like suppose I find a defect and I open a defect in the defect management tool, so the status would be new. After new, it will be assigned to somebody, like if it is assigned to a developer to fix the defect, so status will be open now. Now once it is open, the coder, you can say coder, or the developer is working on this defect, and once he has worked on this defect, so he has fixed the defect. So once he has fixed the defect, again it will be coming in the bucket of tester to test that defect again. So the status here assigned would be, once he has fixed the defect, the status would be fixed. Now it will be again coming to the bucket of the tester to retest the defect. Sorry, here in the bucket of the tester, it will be coming here to retest the defect. And once now the tester will again retest the defect. While he is retesting the defect, its status would be retest. And suppose, like while retesting the defect, I found that the defect is not fixed, is still there, still the error is persistent, error persists. I found that. So again I will reopen the defect, and again its status will be open, and it will again then a same procedure will be followed, like it will be assigned to developer for fixing and all that. Now here there are another stage also. Suppose after reset testing, I have verified. Now the after retest, I just found that it's working fine, everything. So its status would be verified if it is working completely fine completely fine. And finally I will be closing my defect, like defect is closed, error fixed. You can say error fixed here. Okay.
Now there is one more thing to look over here. It's like, suppose when the defect is opened, its status is new, then it will assign to a developer. So its status would be after that open when he's working on the defect. And when the defect is open, and if the developer feels like this is a duplicate defect, like already somebody has opened a defect and error for this error, if somebody has opened defect for the this error, already one defect is there, so it will be considered as duplicate, and it will be rejected and deferred, and it will be not considered a big bug, because we already have defect for that. Okay, so this is basically the various defect status once a defect is being encountered by the tester. Now moving next, I will be talking about the defect life cycle. Like, what are the defect life cycles? So I think I have explained you the defect status before. So defect life cycle goes in the same way. I will be explaining you now. What is a defect life cycle? Like, once a tester encountered a defect, so what are the various cycle through which a defect goes? So tester finds a defect, so status is new. Now the developer project manager will analyze the defect, that whether a defect is valid or not. Is it a valid defect? He will analyze. So if it is not a valid defect, no. So status would be rejected, defect rejected. If yes, then it will see that, is it in, like, are we going to fix this defect in the same cycle? I mean, is it a defect of priority? Like, defect have different status. Suppose if a defect is affecting the major functionality without which we are not able to proceed further, so obviously that defect has to be fixed on priority and as soon as possible. So we will be checking about this thing here. And if a defect is of very low priority, like even my task would be done without fixing that defect for right now, though, so it will be deferred. Like, is it in, we have to check here. If no, then it will be deferred. I'm not, a deferred means I'm not going to fix it in this cycle, I will be fixing it later. And if yes, then I will be checking, like, is it already raised? I mean, do we have any valid defect for that, already raised defect for that? Is it a, like, duplicacy? Basically I'm checking here for the duplicacy. Like, मेरे पास कोई ऐसा ऑलरेडी डिफेक्ट तो नहीं है जो सेम प्रॉब्लम के लिए डिफेक्ट रेज किया गया है, तो अगर डुप्लीकेट होता है तो डुप्लीकेट में चला जाता है. और गाइस, डोंट कंफ्यूज विद डुप्लीकेट एंड वैलिड. वैलिड में हम ये चेक करते हैं कि क्या ये डिफेक्ट वैलिड है, मतलब कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है. कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने जिस चीज़ के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, तो उसके लिए अगर हमने डिफेक्ट रेज कर दिया है तो उसको इनवैलिड बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे हम डुप्लीकेसी चेक कर रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम के लिए हमारे पास पहले से कोई डिफेक्ट है या नहीं. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलिड डिफेक्ट एंड डुप्लीकेट डिफेक्ट. तो अगर डुप्लीकेट भी नहीं है तो उसका स्टेटस नहीं है, तो फिर वो यहाँ जाता है. सो इट विल कम टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर द डेवलपर स्टार्ट्स फिक्सिंग द कोड. ही विल फिक्स द कोड, तो स्टेटस इन प्रोग्रेस आ जाता है. नाउ कोड फिक्स्ड, एक बार कोड डेवलपर ने फिक्स कर दिया तो उसका स्टेटस फिर फिक्स्ड हो जाता है. नाउ टेस्टर रीटेस्ट द कोड, एंड इफ द कोड पासिस, टेस्ट पास तो यस होता है तो कोड फिक्स्ड हो जाता है, नहीं होता है तो स्टेटस वापस से रीओपन हो जाता है. तो ये एक डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता है. लाइक, जब एक डिफेक्ट इनकाउंटर होता है टेस्टर को, तो जब वो एक डिफेक्ट रेज करता है तो इन सारे प्रोसेस से होकर के एक डिफेक्ट को जाना पड़ता है. नाउ मूविंग नेक्स्ट, आई विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. लाइक, यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक द डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट. डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट होता कैसा है? जैसे कि हमने एक डिफेक्ट ओपन किया तो उसका कुछ टेम्पलेट होता है, जो कि टेम्पलेट में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें बताना. जैसे कि अब टेक फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. जैसे ये ABC ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे XYZ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. तो उनकी कुछ एम्प्लॉय ID होगी, कुछ नेम होगा, कुछ इनका एड्रेस होगा, कुछ मोबाइल नंबर होगा. तो कुछ फील्ड, जैसे ये सारी फील्ड्स है ना, ये मैंडेटरी है. जैसे अब ब्लड ग्रुप हो गया, सब फॉर नाउ सपोज कि ब्लड
ब्लड ग्रुप को हमने ऑप्शनल रख दिया है, लेकिन ये सारी फील्ड मैंडेटरी इस फील्ड में आती है, ये हमें बताना ही पड़ेगा। तो सेम चीज़ डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट में होता है कि कुछ चीज़ें अगर हम एक डिफेक्ट रेज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक हमें वो मेंशन करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम अपना डिफेक्ट नहीं रेज कर सकते हैं। तो डिफेक्ट टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें डिफेक्ट आईडी होता है, वी हैव डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन हम देते हैं कि किस चीज़ पे हमें डिफेक्ट मिला है, क्या है उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टेस्ट केस आईडी लिखेंगे कि हमने ये डिफेक्ट कौन से टेस्ट को हम टेस्ट कर रहे थे तो हमें वो डिफेक्ट मिला। मतलब ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे उसी के रिगार्डिंग हम डिफेक्ट ओपन करते हैं, तो कौन सा टेस्ट केस हमारा वर्क नहीं किया जिसके लिए हम डिफेक्ट ओपन कर रहे हैं, तो टेस्ट केस आईडी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेस्टर किसने ओपन किया है, प्रोडक्ट वर्जन, बिल्ड वर्जन, प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिफेक्ट। ये भी मैं आप बताऊंगी आपको कि ये होता क्या है इन डिटेल। प्रायोरिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द defect, and severity is related to the functionality. So this is related to business and this is related to functionality of the defect, then defect status and reproducible or not, a reporting to, and remarks. These are some of the important defect templates that we need to mention. Now moving next, in this slide I will be talking about priority and severity, which I was telling you now. So these two things are very important for a defect, like priority and severity. So priority is something which is based on the business of the customer. Okay, so in this priority we decide which bug to fix first. हमें कौन सा bug फर्स्ट फिक्स करना है, यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं, ये हमारा बिजनेस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। और सिवियरिटी में ये होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, अगर कोई डिफेक्ट हमारे मेजर फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके बेसिस पे सिवियरिटी डिसाइड होती है, मेजर या माइनर को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो किसी मेजर फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करेगा तो उसके बिना, उसको रिजॉल्व किए बिना हम आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है। और अगर किसी माइनर को इम्पैक्ट कर रहा है तो शायद ऐसा हो कि इस साइकिल के लिए हमने उसे छोड़ दिया लेकिन नेक्स्ट साइकिल में हम उसे कर सकते हैं, तो ये फंक्शनैलिटी के बेसिस पे होता है। इम्पैक्ट ऑफ बग ऑन द एप्लीकेशन। ओके, सो प्रायोरिटी कैसे कैसी होती है, हाई, मीडियम एंड लो, ये प्रायोरिटी होती है 3 तरह की। सेम वे सिवियरिटी होती है ब्लॉगर, क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर। सो ब्लॉगर डिफेक्ट वो होता है जिसके बिना, जिसको रिजॉल्व किए बिना हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में मूव ही नहीं कर सकते, यानी नेम सजेस्ट कर रहा है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट ब्लॉगर मीन्स इट completely blocks our testing or our application. Without resolving this I am not able to move to the next module. So this is a blocker defect. Critical defect वो होता है जो मेजर फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर में। मेजर डिफेक्ट होता है जो कि कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट करता है, कुछ मेजर फंक्शनैलिटी के सपोर्टिंग कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट करे, उसको मेजर डिफेक्ट बोलते हैं। माइनर डिफेक्ट होता है जिसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता, जो हम बाद में भी टेस्ट करेंगे तो चलेगा। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स। सो गाइज आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर doubts about what is a defect, what is a defect life cycle, what are the defect status, and what are the priority and severity in a defect. Still you have any query, any doubt, please feel free to comment, and please do like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.